We have to now go for 6.2. I'll read question for you. ध्यान से पढ़ते हैं. A person standing at a distance of 80 meters from a church. एक चर्च है, उस चर्च है, समझो मैं हूँ यहाँ, सामने चर्च है. This is a church. Then the distance between me and church is 80 meters. And I am looking at the top of the church. The angle of elevation हमेशा horizontal से होता है. याद रखो, this is horizontal. Then this will be angle of theta, or this will be angle of depression. ये है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन. So we are going to draw figure accordingly. मैं फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी जैसे दिया है उस हिसाब से. Question 1. See, what they have given us is there is a church. So, a church is church, and this is the place where the person is standing. Okay, so AB is the church, C is the point where the person is standing. Okay, now he is observing, he is looking at the top of the church here. So this will be the angle of elevation, theta, 45 degrees. ये angle of elevation हो गया. The distance between the person and the church, ये जो distance है वो 80 meters है. So how much? 80 meters. What they ask you? They ask you find the height of the church. Height of the church पूछा है. So हमें सब ये बताना पड़ेगा. Solution we have to explain. देखो हमने जो कुछ भी ये फिगर ड्रॉ की है ना, ये एग्जामिनर तो मालूम नहीं है ये ए बी क्या है, बी सी क्या है. तो हमें पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा अब फिगर को. उसके बाद सॉल्यूशन, मतलब पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से हल करेंगे. तो पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद एक्सप्लेनेशन. लेट ए बी be the height of, यही तो पूछा है, find the height of the church. Okay, a person is standing at point C, 80 meters from the church. Angle of elevation at the top of, he looks at the top of the church. No, angle of elevation is 45 degrees. You have to find this. AB is the height of church. BC equal to 80 meters is the distance between church and observer. Also, BC is the horizontal line. Therefore, angle ACB equal to 45 degrees. So, ACB equal to theta equal to 45 degrees is the angle of elevation.
Now please see, we have explained everything जो जरूरी है from the point of view of the figure. अभी हम जाते हैं in right angled triangle ABC. हमें right angled triangle ABC की तरफ जाना है. ये 90 होना चाहिए because understandable है. Church is always perpendicular. Height of a wall is always perpendicular to the ground. So in a right angle triangle, हमें क्या चाहिए? हमें क्या दिया है? Adjacent side दी है. हमें चाहिए opposite. तो opposite upon adjacent क्या होता है? Tan. Tan theta is AB upon BC. Trigonometrical ratio. But tan 45 equal to 1. We know. Create tan 45 equal. Therefore, from 1 and 2, ये दो. Since left hand sides are equal, right hand sides are equal. Therefore, AB upon BC equal to 1. What is this? BC is 80 meters. So AB is also 80 meters. Final answer. Therefore, height of church is 80 meters. Now we are going to go for next question. Question number 2. Question देखो. From the top of a lighthouse, an observer looking at a ship makes an angle of depression. ये angle of depression देखो नीचे दिख रहा है, horizontal से नीचे दिख रहा है. So lighthouse आप जानते हो. अगर आप नहीं जानते तो जो I don't know where you are located, but if you are located in Mumbai, then Mumbai has a huge coastline. So at different locations you may find, maybe not everywhere, 2 or 3 locations. Aksa beach hai, Chowpatty hai, Gorai hai. So where you will find lighthouses. और ये lighthouse आपको, if you go to the beach you get it. और night time में, if you are living close to the ocean, मतलब 1 or 2 kilometers, then you can see in the night time light moving in the sky. That is because of there is a lamp kept in a, वो concept अलग है in a lighthouse. ये अंग्रेजों के, it's old fashioned way of saying that this is a harbor or this is a coastline है. मतलब ships. अभी तो जमाना बदल गया, we have computer and satellites and images we get, and easily you can locate the place and no need of that old-fashioned lighthouse. लेकिन ये पुराने ज़माने के लाइट हाउसेस हैं. It's historical monuments होते हैं, कभी कभी देखने को अच्छा लगता है. So this is lighthouse. Suppose there is a lighthouse, and from lighthouse I am
मतलब I am sitting on a lighthouse. मैं lighthouse पे ऊपर गया. It's at the height from the ground. I climb out, climb करके ऊपर गया, and then when I sink into the ocean, I have to sit down. मैं नीचे देख रहा हूँ ocean. I see the ship. So this is my horizontal line, and I sit down. So I make a angle with the horizontal which is moving downward. So angle of depression. Okay? That is 60 degrees. If the height of a lighthouse का जो height है वो 90 meters है, find how far is the ship from the lighthouse से कितनी दूरी पर ship है, ये हमें find करनी है. Accordingly, we have to draw a figure. So, suppose this is lighthouse, और ये ground. This is the ground, and this is lighthouse. Then, इसको A लेते हैं. Okay? Now, I am sitting at the lighthouse and the ship is somewhere here. So I have to look down. So, and this is the horizontal line. This is the horizontal line. So I look downward. So this is the angle made downward. देखो arrow मेरा. My arrow is downward from the horizontal line. Okay? This is 60 degrees. Why I have drawn a horizontal line? Because this line and this ground are parallel to each other. We have to assume they are parallel to each other. Then they form an alphabet Z. देखो. Alternate angles. So if this is 60, this also will be 60 degrees. Okay? What is the height of the lighthouse? 90 meters. Now you can use a tan 60 in this triangle ABC and get the adjacent side. Okay? चलो अब ये जो हमने किया उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा यहाँ. Solution. Let BC जो पूछा है वो पहले लिखो. Let BC be the distance of ship from the lighthouse. This is what we want. ये हमें find करना है. AB, what is AB? AB is equal to 90 meters. Is the height of lighthouse. AD is the horizontal line. Angle BAC equal to angle ACB. Angle BAC equal to 60 degrees. This is the angle of depression. Now, angle ACB equal to angle BAC equal to 60 degrees. Alternate तो हमने whatever needed to be explained regarding this figure, I have already explained it. जो कुछ भी explanation करना था ये फिगर के बारे में मैंने बता दिया. अब हम जाते हैं सोल्यूशन की तरफ. अब हमें ये ट्राइंगल लेना है. इन ट्राइंगल इन राइट वर्क को देखो. राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC. ये ज्योमेट्री ऑफ द फिगर याद रखो. ये 90 होने वाला. लाइट हाउस ऑफ दिस पर
कोई भी वॉल है, स्टिक है, पोल है, all will be perpendicular to this. So tan 60 degrees is opposite upon adjacent. AB upon BC. ये first trigonometrical, ये trigonometrical ratios है, but tan 60 की वैल्यू क्या है? √3. Therefore, from 1 and 2, since left hand sides are equal, right hand sides equal, AB upon BC is √3 upon 1. So हमें क्या फाइंड करना है? BC. So BC will be ये 90 हो जाएगा. See, they are given us AB as 90. So लिखो यहाँ 90 upon BC equal to √3 upon 1. So BC will be 90 upon √3. Now we are studying in 9th standard rationalizing the denominator. इसके लिए ये irrational number है, उसको rationalize करना है. √3 is irrational. √3 को rationalize कैसे कर सकते हैं? Multiply and divide by √3. Multiply and divide by √3. So BC will be 90 √3 upon 3. Divide करो 3 1 और 3 3 का. So BC will be 30 into 1.73. उन्होंने कितना दिया है? देखो √3 की वैल्यू, √3 की वैल्यू है 1.73. √3 is 1. Therefore BC कितना होगा? 1.73 तो 17.3 हो जाएगा. 10 से मल्टीप्लाई करोगे उससे 3. 3 3 9, 3 7 21, 3 1 3 5. So it is 51.9 meters. Answer. Therefore, the distance of ship from the lighthouse is 51.9 meters. Now we go to third question. Question number now 3. Two buildings are facing each other on the road of a width 12 meter. 12 मीटर का एक बड़ी बिल्डिंग होगी, एक छोटी बिल्डिंग होगी. दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 12 मीटर का.
From top of the first building, जो अच्छा top of the first building, which is about 10 meter high, छोटी बिल्डिंग से टॉप से बड़ी बिल्डिंग का टॉप है, उसको हम लोग स्ट्रिंग से जोड़ते हैं. The angle of elevation of top of the second is found to be 60 meters. What is the height of the building? Okay. देखो, ये बड़ी बिल्डिंग है, ये बड़ी बिल्डिंग है, ये छोटी बिल्डिंग है. ओके, तो मैं ये छोटी बिल्डिंग का नाम लिखता हूं ए बी सी एंड ए बी इज अ स्मॉल बिल्डिंग. उसका हाइट कुछ 10 मीटर्स है. Distance between these two buildings is 12 meters. ये मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, देखो डॉटेड लाइन. रेक्टेंगल हो जाएगा. ओके, now this is the angle of elevation. यहां से कोई देख रहा है ऊपर का बिल्डिंग, the angle of elevation है. इसको हम लेते हैं ए एम. ये 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन. ओके, अब ध्यान से देखो, ये रेक्टेंगल फॉर्म है. देखो, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी एम, ए बी सी एम, ए बी सी डी नहीं, ए बी सी एम. AM is perpendicular to DC, geometry of the figure. DC is perpendicular to DC and AB is perpendicular to DC, geometry of figure. तो ये तीनों 90. ये एंगल 90. If 3 angles of a quadrilateral is 90, the fourth angle automatically is going to be 90 because sum of the layers of angles of a quadrilateral is 360. तो ये भी 90 हो जाएगा. तो ये क्या होगा? Quadrilateral ABCM becomes a rectangle. अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल कौन है? तो ये है आपका 10 मीटर, ये भी 10 मीटर होगा. ये 12 है, ये भी 12 मीटर होगा. नाउ यूजिंग tan 50 यू फाइंड वैल्यू ऑफ dm. एक बार dm मिला तो यू ऐड cm प्लस dm, आपको हाइट ऑफ अ बिगर बिल्डिंग मिल जाएगा. सो हमने अभी जो कुछ भी यहां मैंने एक्सप्लेन किया, I will write in a solution. Let CD, ये तो हमें फाइंड कर रहा है ना. Let CD be the height of second. ये तो फाइंड करना आप देखो. लेट CD be the height of the second building. AB equal to 10 meters with the height of first building. BC equal to 12 meters with the distance between two buildings. AM is the horizontal line. ये AM horizontal line है. Therefore, angle DAM equal to 60 degrees is the
angle of elevation. Now, sec AM perpendicular CD, DC perpendicular DC, and AB perpendicular DC. Geometry of figure किया है. Geometry, and it is understandable that the two buildings will be perpendicular to the ground. ये इसलिए geometry of the figure is लिखते हैं. Therefore, in quadrilateral ABCM, angle ABC equal to angle AMC equal to angle BCM equal to 90 degrees. Therefore, quadrilateral ABCM is rectangle. Therefore, CM of MC equal to AB equal to 10 meters and AM equal to BC equal to 12 meters. Opposite sides of rectangle are congruent. Therefore, तो हमने जो कुछ भी यहाँ whatever I have explained you here, I have written everything here now. अभी हम जाते हैं solution, मतलब numerical aspect के ऊपर. हम आते हैं in triangle, in right. In right angled triangle ANB, tan 60 is opposite upon adjacent. Opposite is upon adjacent. Tan 60, you know. Yeah. Trigonometric लिखो तो भी चलेगा. Trigonometric ratio. But tan 60 is equal to root 3. From 1 and 2. From 1 and 2 what we get? Since left hand side is equal, right hand side will be equal. Therefore, dm upon am equal to root 3. तो root 3 की वैल्यू दी नहीं है. Here the examiner sometimes expect you to write root 3, sometimes they don't. तो मैं क्या करूँगा? हम यहाँ लिखेंगे नहीं, इन में डालेंगे रूट 3 की वैल्यू. Therefore, dm upon am कितना है 12. So dm equal to 12 root 3 meters. हमें डीसी चाहिए. डीसी DC equal to dm plus m. D dash, m dash,
So what is DM? 12 root 3 plus CM is 10. तो ये हो गया आपका मीटर एक एंगल और DC इक्वल 12 into 1.73 plus 10. 1.73 into 12 multiply करो 12 3 are 36 3 carry 12 7 is 84 plus 3 87 3 8 carry 12 1 are 12 plus 8 20 तो ये आएगा 20.76 plus 10. This is 30.76 meters. So either this or this. You write both the answer. क्योंकि इसके पहले के क्वेश्चन में 1.73, अब तुम लोग बोलोगे सर 1.73 उन्होंने दिया था इसलिए मैंने लिया। 9th में हम सीख चुके हैं irrational numbers, rational irrational numbers में what is 1.73 and you are expected to know it. 1.732 and आगे dot है। So 1.73 मिनिमम इतना तो लिखिए, तुमको मल्टीप्लाई करना है, you should know it. तो ये आपका आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 4। टू पोल्स, इसे दो बिल्डिंगें थी, यहां भी 2 पोल्स हैं। 2 पोल्स ऑफ, एक हाइट है 18, एक लंबा पोल है 18 मीटर का, एक छोटा पोल है 7 मीटर का, आर इरेक्टेड ऑन द ग्राउंड। द लेंथ ऑफ द वायर फास्टनिंग एट दैट, द टॉप के जो टॉप ऑफ द पोल्स है उसको हमने स्ट्रिंग से बांधा है और टाइट बांधा है स्ट्रिंग से। सो वो जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वो 22 मीटर है। फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद, हमें एंगल मेड बाय द वायर विद हॉरिजॉन्टल, मतलब ये एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल होगा, ये एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल हमें निकालना है। AB is the pole, छोटा पोल, length is 7 meters. DC is the bigger pole, length is 18 meters. Total 18 meters है। ये हॉरिजॉन्टल है, वापस ये परपेंडिकुलर, ये हमें ज्वाइन करना है। See what is given again? 2 poles of height 8, हाँ ये तो कुछ तो दिया होगा भाई, हाँ ये 22 मीटर, कुछ तो मिसिंग है। हाँ ओके, देखो ये 7 है, ये रेक्टेंगल होगा ए बी, देखो ए एम, सॉरी जैसे मैंने पहले कहा था एम इज परपेंडिकुलर डीसी,
BC and AB both are perpendicular BC. तो ये तीन एंगल 90 हो जाएगा तो रेक्टेंगल हो गया. तो ये दोनों ये 7 हो जाएगा. दिस फ्रॉम हियर टू हियर इट इज 7. तो ये क्या होगा? फ्रॉम हियर टू हियर इट इज 11. ये 11 हो जाएगा. और ये 60 है. तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. सॉरी ये 60. हमें एंगल फाइंड करना है. 30 हो जाएगा. 60. हमने जो कि यहाँ भी फिगर ड्रॉ किया है ना, उसका मतलब क्या है बताना. तो पहले ए बी, लेट ए बी बी द हाइट ऑफ स्मॉल पोल. बी सी AB equal to 7. DC equal to 18 meters. Be the height of big pole. AM is the horizontal line. Therefore, let angle DAM equal to theta be the angle of elevation. ये हमें फाइंड करना है. ओके. AM perpendicular to DC, DC perpendicular to BC, and AB perpendicular to BC. This is geometry of figures. Therefore, in quadrilateral ABCM, angle ABC equal to angle BCM equal to angle MCB equal to 90 degrees. Therefore, quadrilateral ABCM is a rectangle. Therefore, MC equal to AB equal to 7 meters. Therefore, now what is DC? DC equal to DM plus MC. ये है B dash, M dash. Therefore, DC is 18 equal to DM plus 7. So, what is DM? DM will be 11 meters. So यहाँ तक up to here, whatever you have mentioned हमने लिख दिया. अब आगे लिखते हैं हम लोग numerical part. Therefore, in right angled triangle DMA. Now, what is the what? क्या मिला है आपको? What information is provided and we have? We know opposite side and we know hypotenuse side. So, what is the ratio of opposite upon hypotenuse? 9. Therefore, sin theta is dm upon AD. Trigonometric ratio. But नहीं, उसके बाद लिखो. इसका मतलब क्या हुआ? Therefore, sin
theta is Vn कितना है 11/22. Therefore sin theta is equal to 1/2. This is 1. But sin 30 equal to 1/2. ये 2 we know. But sin 30 is 1/2. Therefore from 1 and 2, right hand sides are equal, so left hand side is equal. Therefore sin theta equal to sin 30 degrees. Therefore considering only the angle, therefore theta is 30 degrees. Answer, therefore the angle of elevation is 30. Fourth question completed. Now we have to go to question number 5. और स्टॉर्म एक बहुत तूफान आया. स्टॉर्म मतलब तूफान. और स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री एंड द ट्री टॉप rested 20 meters from the base of the tree, making an angle of 60 degrees with the horizon. Find the height of the tree. अभी थोड़ा अपना इमेजिनेशन का इस्तेमाल थोड़ा करना पड़ेगा. ये है ट्री और यहां से वो टूट गया है. This is the point. A, B, C, D. This AB is same as BD. वो जो झाग टूटा ना, वो गिरा है. It touches the ground at point D. ये ग्राउंड है. This distance is 20 meters या कुछ लिया उन्होंने. The tree rested on 20 meters. ये जो टूट के नीचे गिरा, it touches the ground at 20 meters from the base of the tree. Okay, now it is making, this is making angle of elevation 60 degrees. मेरे ख्याल से 60 दिया है ना? Yes, with the horizontal. हमें height of the tree find करनी है. हमें दो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फाइंड करने हैं. देखो, एडजेसेंट साइड दिया है तो tan 60 निकाल के ये निकालेंगे, और मैं sin 60 निकाल के ये निकालेंगे. Once you get BC and BD, but BD equal to AB, so add these two, we get
हाइट ऑफ द ट्री। अभी जो हमने यहां लिखा है वो यहां मेंशन करें। लेट ए सी बी द height of unbroken tree। ये हाइट ऑफ द अनब्रोकन ट्री। ए बी इक्वल टू बी डी, बी द लेंथ ऑफ ब्रोकन पार्ट ऑफ दी ट्री। ये ब्रोकन पार्ट है। बी सी बी द हाइट ऑफ अनब्रोकन पार्ट आफ्टर दी CD is the distance between base of tree and top of and the broken part of tree which touches the ground. Also, CD is the horizontal line. Therefore, angle BDC 60 degrees is the angle of elevation. चलो, जो कुछ भी हमें लिखना था रिगार्डिंग द फिगर एक्सप्लेनेशन था वो हमने सब लिख दिया। अभी न्यूमेरिकल पार्ट पे आते हैं। ये एंगल है मालूम है। वी नो दिस साइड, वी वांट टू नो दिस साइड एडजेसेंट, अपोजिट एंड एडजेसेंट टू tan 60 in right angled triangle BCD. Tan 60 is opposite upon adjacent. Here we go now. Metric ratio. But tan 60 is nothing but √3. हम कब से करते आ रहे, 2 बार हुआ। Therefore, from 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड से इक्वल, therefore राइट हैंड साइड से इक्वल हो जाएंगे। Therefore, BC upon CD equal to √3 upon 1. CD हमको मालूम है 20, therefore BC upon 20 equal to √3 upon 1. Therefore BC कितना हुआ? BC is 20 meters. √3 की वैल्यू हम बाद में डालेंगे। हमें 2 आंसर
और में आंसर लिख दें। अब ये तो मिल गया अपने को, अब ये फाइंड करना है। ये अपने को मालूम है, दिस इज एडजेसेंट एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, तो कॉस ले लो ना, राइट एंगल्ड ट्रायंगल साइन लो तो भी साइन लो तो भी चलेगा, बिकॉज वी नो दिस ना। साइन 60 आपकी मर्जी, कॉस ले लो, जो दिया है वो टेंशन नहीं। cos 60 is adjacent upon hypotenuse, because we want to find this now. CD upon BD. Ratio. But what is cos 60? याद है मैंने फिगर ड्रॉ की थी, ये 30 है, ये सॉरी ये 30 है, 60 है, ये 90 है। So 1, 2 and 3. So what is cos 60? Adjacent upon opposite. No, adjacent upon hypotenuse, sorry. Cos 60 is adjacent upon hypotenuse. इसको समझो, BC this is hypotenuse is BC. It's CD upon BC. So but cos 60 is 1 upon 2. ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ था। We know. Therefore, from 3 and 4, CD upon BC, 1 upon CD is 20. So 20 upon BC is 1 upon 2. Therefore, BC is 40 meters. Now we know ये फिगर चाहिए। Now what is, हम जानते हैं ये BD होगा, ये BD होगा और ये BD होगा। Now we know BD is 40 और ये 20√3, इन दोनों को ऐड करो, ये 40 है तो ये भी 40 है, तो देखो AB is equal to BD equal to 40 meters. Therefore, AC क्या होगा? AC will be AB plus BC. तो इसको ऐड करो, AB is 40
प्लस 20√3, ये मीटर्स में आएगा ये आंसर, और 40 प्लस 20 इंटू 1.73, 1.73 इंटू 1.73 इंटू ये 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 17.3 इंटू 2, 6, 14, ये होता 34.6, 34.60 प्लस 40, ये होता है 74.6 मीटर, ये आएगा 74.8 मीटर। तो फाइनल आंसर लिखो। Height of unbroken trees is 74.6 meters, or ये 40 प्लस 20√3, ये दोनों में से एक आपको लिखना है। Now we are going to go for the last question, that is question number 6. Question 6 करते हैं। A kite is flying at a height of 60 meters from the ground. 60 meters from the ground, kite is flying. The string attached to a kite is tied to a ground. Okay, it makes an angle of elevation 60 degrees with the ground. Assuming that the string is straight, find the length of the string. √3 की वैल्यू में दी है। चलो, आप लोगों ने पतंग उड़ाई होगी, एक्चुअली पतंग, मुहावरा नहीं, मुहावरा पतंग उड़ाना मतलब झूठ बोलना, बड़ा चढ़ा कर बोलना, है ना? काइट देखना है, काइट बात करना है। तो सपोज दिस इज द हाइट ऑफ अ काइट फ्रॉम द ग्राउंड। ये आदमी यहां खड़ा है, जहां से उड़ा रहा है, ये फ्लाइंग द काइट फ्रॉम दिस पॉइंट, और ये काइट लंबा उड़ा, ये काइट है। सो पोजिशन ए इज द position of a kite, C is the position of a person, and B is the height of the kite from the ground, which is 60 meters. मैंने और क्या दिया है देखो, the angle of elevation जो दिया है ना, which kite makes is 60 degrees. हमें क्या फाइंड करना है? Find the length of the string. जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है लिख दो। Let AC, ये तो फाइंड करना है ना अपने को। Let AC be the length of the string
AB 60 meter is the height of kite from the ground. BC is the horizontal line. Angle ACB equal to 60 is the angle of elevation. हो गया. जो इंफॉर्मेशन चाहिए था वो सब हमने लिख दिया. अभी जाते हैं प्रॉब्लम की न्यूमेरिकल. इन ये 90 है तो राइट. एंगल ट्राइंगल ABC हमें 60 दिया एंगल. ये अपोजिट साइड दिया हुआ है. हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है. अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज इज नथिंग बट साइन. साइन 60 is AB upon trigonometric ratio. But sin 60 कितना है? √3/2. देखो ABC 30, 60, 90. So 1, 2 and √3. So sin 60 कितना होगा? Opposite upon hypotenuse. So √3/2. ये 1. Therefore AB upon AC is √3/2. From 1 and 2. Therefore, AB दिया हुआ है 60 upon AC is √3/2. So AC क्या होगा? 60 into 2 is 120 upon √3. इसको रैशनलाइज करना है. रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. इरेशनल है. √3 इज इरेशनल. उसको रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √3. AC क्या होगा? 120 into √3/3. So it will be 40 √3. AC equal to 40 √3 or AC what is the meter or 40 in उनको शायद उन्हें दिया है 1.73. Since √3 is 1.73. तो ये आएगा AC equal to 1.73 into 4. इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल पॉइंट 17.3. 4 3s are 12, 28, 29. 4 3s are 12, 2, 1 carry, 7, 4, 28 plus 1, 9, 2 carry. 4 1s are 4, 6. So the 69.2 meters. Answer. Therefore, length of string is 69.2 meters. With that, we complete 6.2.